morning students, welcome back to SST class of 7th. Children, in my previous video I was explaining you chapter number 7, that is Civics, and the name of the chapter is Advertising. Okay, so in today's class I will be explaining you about the further topic. So today we will study about the brand values and the social values. Okay, so what are brand values and social values? Advertisements have become essential part of our life. हमें पता है advertisement हमारे life का बहुत ही essential part है, and they influence our lifestyle and the way we perceive other people and our surrounding. Okay, so just look in the book. Due to influence of ads, packaged commodities are often considered better than those sold loose, but packaging determines the quality of the product. तो जो ऐड होता है जिसमें हम कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट भेजते हैं उससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसन अगर मार्केट में खुला मिलता है, मार्केट में अगर आटा खुला मिलता है, लेकिन अगर हम उसको कोई ब्रांड नेम दे दे या फॉर्च्यून या आशीर्वाद, तो उसका क्वालिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्रांड नेम आ जाता है. In many households, they do not want to compromise on the quality of things they serve their family, so it is better to buy branded products. तो बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अपने हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, दैट्स वाई वो ब्रांडेड चीजें ही खरीदती हैं. This adversely affects the small manufacturers who eventually do not have the resources to compete with the branded products. और इसके कारण जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो उनके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रांड के साथ compete नहीं कर सकते. Advertisements tend to make commodities and services expensive as they include the price of packaging and advertising. और जो advertisements होते हैं वो चीज़ों के दाम को और enhance कर देते हैं क्योंकि उसमें उनकी पैकेजिंग और advertising का प्राइस इंक्लूड होता है. Many ads appeal to our sentiments. This negatively influences those who cannot afford the brand. So advertisements affects our sentiments because it influences to buy the product. For example, an oil brand uses mother's care and love for her child to sell its brand. It suggests that her concern for her child's well-being is best expressed if she uses that particular brand. This negatively affects those mothers who are unable to use the product due to financial constraint. For example, कोई भी एक oil है, सपोज आप कोई भी एक ऑयल ले रहे हैं और उसमें दिखा रहा है कि माँ अपनी बेटी का या बच्चों का कितना केयर करती है उस ऑयल को लगा के, तो कुछ ऐसे मदर हैं जो उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को नहीं बाय कर पा रहे, तो नेगेटिवली वो उनके सेंटिमेंट्स को इफेक्ट करता है. By relating our emotions with a commodity, advertisements tend to affect the manner in which we value ourselves. तो advertisements हमारे sentiments को टारगेट करके हमें इन प्रॉम्प्ट करते हैं ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें. We are at times tempted to buy products irrespective of whether they are worth buying or not because they are endorsed by our favorite actors or players. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे फेवरेट एक्टर या प्लेयर उस चीज़ को एंडोर्स करते हैं तो हम उसको खरीदना चाहते हैं. Thus, advertisements have a tremendous influence on our lives as they influence the way we perceive others and ourselves. They at times distort facts to promote the interest of the manufacturer. Therefore, we should be alert, carefully analyze the impact of advertisements and then decide what to buy rather than letting the advertisements manipulate our decision-making process. Okay? Now, मेकिंग ऑफ एन एडवर्टीजमेंट. अब कोई एडवर्टीजमेंट कैसे बनता है? एडवर्टीजमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मोटिवेटिंग द कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज डिसाइड ऑन पिक्चर्स, वर्डिंग्स एंड इमोशंस टू सेल अ प्रोडक्ट. तो एडवर्टीजमेंट बहुत चीज़ों से मिलके बनता है. उसमें हम पिक्चर ऐड करते हैं, वर्डिंग्स ऐड करते हैं और इमोशन ऐड करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें. Developing a product or service is now only a small part of the battle for a company. In order to establish oneself, the companies have to opt a channel of communication that will effectively promote their commodity. तो सबसे पहले अपने एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्हें कोई चैनल चाहिए, कोई मीडिया चाहिए, मे बी न्यूज़पेपर, मे बी टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया.
For this, they have to employ the services of advertising agency, which has a team of creative people like copywriters, visualizers, media planners, and market researchers to create an ad campaign and efficiently launch a product. और प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले वो एडवर्टीजमेंट कंपनी से कोरिलेट करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं. Once a company approaches the agencies, they need to decide for whom the product or service is intended. और सबसे पहले जब वो एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलना चाहिए कि वो किस टारगेट के लोगों को, पीपल को टारगेट कर रहा है. Who the target audience is and what is in its position is related to other similar products. और कैसा उसका रिलेशन है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ. To identify their market segment, they will conduct a market survey. और इसके लिए वो एक मार्केट सर्वे करते हैं जिसमें पता चलता है कि कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं. ओके, सो इन दिस वे एन एडवर्टीजमेंट इज मेड. नाउ द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डेमोक्रेसी. अब क्या रोल है एडवर्टीजमेंट का डेमोक्रेसी में? Advertising promotes inequality in society by creating stereotypes. Advertisement एक तरह से क्या करता है? Inequality, असमानता लाता है, क्योंकि ये stereotype जो हम पूर्व धारणा मानते आते हैं, जैसे कहा जाता है कि stereotype है कि गर्ल्स आर वेरी वीक, बॉयज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एडवर्टीजमेंट एक तरह से stereotype क्रिएट करता है हमारे सोसाइटी में. Those who do not fit into the image created by advertisements feel neglected and inferior. और जो लोग एडवर्टीजमेंट्स के टारगेट में फिट नहीं हो पाते वो अपने आप को बहुत इंफीरियर, छोटा और नेग्लेक्टेड फील करते हैं. Its basic aim is to show that not all the products and services are equal. इसमें पता चलता है कि सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सबके लिए नहीं है. In today's time, our choice of products and services is guided by the advertisements we are bombarded with. और आज के टाइम में जो प्रोडक्ट हम सर्विसेज यूज करते हैं वो हमारे एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर ज़्यादातर बेसिक होते हैं. जैसे सपोज मार्केट में सोप तो बहुत होता है ना, बट इफ अगर हम निरमा ले या लक्स ले, सो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली. बट अगर हम डव लेना चाहें, इट्स वेरी कॉस्टली. तो ये ज़्यादातर मिडिल क्लास या हायर क्लास पीपल को टारगेट करता है. तो जो लोअर क्लास पीपल हैं, दे फील नेग्लेक्टेड एंड इंफीरियर. ओके, those who cannot afford these expensive products feel deprived and this further widens the gap between the rich and poor. और जो लोग ये प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते तो वो बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं और इस तरह रिच और पुअर का गैप ज्यादा बढ़ जाता है. Advertisements often fail to reflect the true image of the society. और एडवर्टीजमेंट में कभी भी हम ट्रू इमेज नहीं दिखाते सोसाइटी की. We often assume that branded products are expensive because they are of better quality. और हमारा ऐसा सोचना है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, वो अच्छे होते हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है. On the contrary, there is no relation between the two and many times similar cheaper commodities are better than the branded ones. But ऐसा नहीं है. कभी कभी cheaper products भी ज़्यादातर branded products से अच्छे होते हैं. This mindset obviously affects the livelihood of many small traders as they tend to lose business. जिसके कारण बहुत जो छोटे स्केल के मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. Moreover, big business houses have the resources to repeat advertisements. और जो बड़े resources मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे resources होता है जिसके कारण वो एडवर्टीजमेंट कर करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. Therefore, the market for the smaller business is limited to weekly markets and neighborhood shops. तो ये जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनका वीकली मार्केट या आसपास के एरिया तक ही पहुंच पाता है. For example, local bakeries are losing out of branded biscuits as people feel that it is fashionable to buy them. और जैसे लोकल बेकरीज में लोग बिस्किट बनाते हैं तो लोग उनको न खरीद के ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे कि हाइड एंड सीक या बॉर्बन ये सब बिस्किट खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो लगता है फैशनेबल. इट्स वेरी गुड. Advertisements that focus on the life of the rich and famous tend to overlook issues like poverty, discrimination, the dignity of fellow citizens that are central to democracy. और कभी-कभी advertisements हमारे sentiments को affect भी करते हैं. Okay, so more than selling commodities, advertisements influence our perception, ambition, and dreams.
Therefore, before making a purchase, we should critically examine what they are selling and not get swayed by their advertisements. तो जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसको पहले प्रॉपरली एनालाइज कर ले कि जो भी हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं. सो सिर्फ एडवर्टीजमेंट से एंडोर्स करके हम उसको ना खरीदे. ओके, सो चिल्ड्रन, दैट इज about the chapter. Now this is your subject enrichment chapter. आपको पता है subject enrichment chapter का मैं सिर्फ exercise discuss करूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद से ही करने हैं. Let's start with our exercise discussion. Question number 1 is multiple choice questions, page number 259. Tick the correct options. First one, what is advertisement? Option A, cheap publicity. Option B, method of mass communication. And option C, technique to fool people. So the right answer is option B, that is method of mass communication. Then question 2, advertising promotes inequality in society by creating option A, stereotypes, option B, brand name, and option C, market survey. So the right answer is option A, that is stereotypes. Now question B, select 2 television commercials and answer the following. तो ये आपके लिए होमवर्क है, दैट इज फॉर यू. आप लोग रोज टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो उसमें से कोई 2 कमर्शियल मतलब कोई 2 एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करिए और इसको फिल करिए. जैसे फर्स्ट नेम ऑफ द कमर्शियल. सपोज आपने कोई कमर्शियल देखा हॉर्लिक्स का, अमूल का या कोलगेट का, यू हैव टू राइट इट. देन व्हाट आर दे प्रमोटिंग, वो क्या प्रमोट कर रहे हैं. Then third is what information is being provided in the commercial, that you have to note down. Did a famous personality or professional endorse the products? कोई कौन से सेलिब्रिटी उनको एंडोर्स कर रहे हैं. Then what is their unique selling point? उनका unique selling point, उसकी स्पेशलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की. And do the advertisements influence you buying? और क्या आप उस प्रोडक्ट को देख के उसको खरीदते हैं. So this is homework for you. You have to do it in your copy. Okay. Now again come to page number 260. Question number A, that is multiple choice questions. Tick the correct options. First one, what makes the advertisers choose a particular medium to advertise? Option A, merchandise. Option B, target market. And option C, both A and B. So the right answer is option C, that is both A and B. Now question number 2, what is the most important source of earning for the media? Option A, news. Option B, films. And option C, advertising. So the right answer is option C, advertising. Okay. Now question B, short answer questions that you have to do by yourself. ये आपको खुद से ही करना है. Go through the book, read it, you will get all the answers. Then question C, long answer questions. ये भी आपको खुद से करना because it is subject enrichment chapter. So you have to do by yourself. Then question number D, HOTS, higher order thinking skill questions, that also you have to do by yourself in your homework copy. So our chapter is done. Now in my next class I will be taking a new subject enrichment chapter. Okay, so children, that is all for today. Thank you class.